हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फो का जो सब टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लेसन को हम कैसे प्लान करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी भी लेसन प्लान को जब बनाते हैं सबसे पहले हम उसकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ को फिल करते हैं। सो विल स्टार्ट बाय राइटिंग डेट, नेम ऑफ द स्कूल, पीपल, टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड ऑन द लेफ्ट साइड। फिर पार्टीशन और उसके राइट साइड में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक और ड्यूरेशन। आफ्टर दैट वी विल राइट जनरल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी सब्जेक्ट को जिसको आप पढ़ाते हो, आपको पता है कि सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में ज़रूर पूरे होंगे। ये आपको मैक्सिमम 5 लिखने हैं, ये हर सब्जेक्ट के अलग होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के अलग होते हैं। साइंस में आपको लिखना है टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, टू डेवलप लॉजिकल एंड डिसीजन टेकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students. After that, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक टीचर अपनी क्लास में लेके एंटर करता है। ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, इसमें आप श्योर नहीं होते हो कि ये ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन क्योंकि लेसन प्लान जो है वो प्री प्लानिंग होती है तो आप इसे प्री प्लान करके रखते हो। यहाँ आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है जिसमें कैप डोमेन पूरा होता हो। ओके, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप जो भी ऑब्जेक्टिव लिखोगे उसके ऑब्जेक्टिव्स सेम आप जो अपने प्रेजेंटेशन में लिखोगे उसके टीचिंग पॉइंट में भी वही होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एग्जाम्पल्स। तो ये जो डिफाइन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये आपकी टीचिंग पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, डिफाइन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप मिनिमम 5 लिखोगे। तो we'll start by writing students will be able to define harmful microorganism with examples. Students will be able to recall microorganism and its uses. Students will be able to explain harmful effects of disease causing microorganism. Students will be able to identify pathogens in plants and animals. Students will be able to illustrate how some insects and animals act as carriers of disease causing microbes. उसके बाद टीचिंग एड्स, आपको पता है कि आपकी टीचिंग को इन्हांस करने के लिए आप बहुत सारे एड्स का यूज़ करते हो। ये 2 होते हैं, जनरल टीचिंग मटेरियल एंड स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल। इन जनरल टीचिंग मटेरियल यू विल राइट चॉक, टेस्टर, ब्लैक बोर्ड, एंड इन स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल यू विल राइट चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको लिखना है टीचिंग मेथड्स। वैसे तो साइंस टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका यूज़ करते हो आप, लेकिन सबसे एप्ट मेथड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को माना गया है। फिर आप लिखते हो टीचिंग मैगज़िम्स, ये आपको 2 लिखने हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। देन प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप जिस टॉपिक को बच्चों में इंट्रोड्यूस करने वाले हो यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कहाँ तक है, क्योंकि इस टॉपिक को आप डायरेक्ट क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको बच्चों के मुँह से इसे निकलवाना होगा उनके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंगली। तो इंट्रोडक्शन आप बनाओगे, उसके 3 टेबल, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर्स, एक्टिविटी, स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड आंसर। क्योंकि ये प्री प्लानिंग है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे ये आंसर करेंगे। आपको याद रखना है कि ये एक जेड पैटर्न में बना हुआ होना चाहिए। आप जो क्वेश्चन करोगे उसका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में उस आंसर जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो we'll start. Name the symptoms of a person who is suffering from cold and cough. Students will answer fever, headache, cough and sneezing. Next question में इन सब में से कुछ भी आपका इंक्लूड होना चाहिए। Why we should keep a handkerchief on nose and mouth while sneezing? Students will answer to prevent spread of communicable disease. Then next question, which type of microorganism will cause communicable disease? And they'll say
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको आपका टॉपिक मिल चुका है, अब आप इसे अनाउंस करोगे और अपना जो प्रेजेंटेशन है या आपकी जो टीचिंग है वो आप स्टार्ट करोगे। तो यू विल राइट स्टेटमेंट ऑफ एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको 4 टेबल्स बनाने हैं। टीचिंग पॉइंट, पीपल, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में आपको याद होगा मैंने बताया था स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप जो पॉइंट लिखते हो आपको यहाँ पे उसे ही डिस्कस करना है। हमने वहाँ लिखा था स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इसे अब एक्सप्लेन करेंगे। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants, and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. In students' activity, you will write, student will listen carefully. ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आप उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ पे लिखा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Many diseases like cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis are communicable diseases, microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases. For example, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. In blackboard work, you will write microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are called as communicable disease. Example, cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. नेक्स्ट आपको क्लास के बीच में बच्चों से क्वेश्चन करना है। तो आप क्वेश्चन करोगे गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। दे विल आंसर कॉलेरा, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। फिर आप उनको रीइंफोर्स करोगे। वेरी गुड। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एज कैरियर्स। देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animals' excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on garbage and animals' excreta, pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. Examples of carrier: female Anopheles mosquito carries parasite of malaria. Female Aedes carries dengue. In students' activity, you will write student will listen carefully and note down important terms. आपका next topic है disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in animals and plants but also in other animals. In students' activity, you will write students will listen carefully.
For example, anthrax is a dangerous human disease as well as cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. फिर आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट. दे विल आंसर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. आप बोलोगे गुड. आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The diseases reduce the yield of crops. They can be controlled by certain use of chemicals which kill the microbes. Next topic, food poisoning. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance and can make the food poisonous causing serious illness and death. इसके साथ ही आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट रिकैपिचुलेशन जिसमें आपने अभी तक जो भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं आप दोबारा से उसे क्लास में रिवाइज कराते हो. So in recapitulation, you will write some microorganisms cause disease in human beings, plants and animals and are called as pathogens. Microbial diseases that can spread from an infected person through air, water, food or physical contact are communicable disease. Example cholera, tuberculosis, chickenpox. Some insects and animals act as a carrier of disease causing microbes. Several microorganisms cause disease in plants, humans and animals too. In animals, anthrax is a dangerous animal and human disease. In plants, several microorganisms disease reduce the yield of crops. Food poisoning is also due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Then evaluation. आपने अभी तक क्लास में जो भी बच्चों को पढ़ाया है, you need to evaluate कि उन्हें कितना समझ में आया है, तो आप उन्हें क्वेश्चन करोगे. What are harmful microorganisms? Dengue is caused by dash. The most common carrier of communicable disease is A. Ant, B. Housefly, C. Spider, D. Dragonfly. 4. Anthrax is a plant disease. 5th. What is food poisoning? इवैल्यूएशन के बाद आपको होमवर्क देना है जिसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में किया है और इवैल्यूएशन में किया है वो सेम क्वेश्चन आप होमवर्क में नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन देना है बच्चों को होमवर्क में और एक क्लोज एंडेड. So the first question is fill in the blanks. Disease causing microorganisms are called dash. B. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person is called dash. Question number 2. Write a short paragraph on harmful effects of microorganisms. That's all for today. Hope आपको समझ में आया हो. अगर आपको कोई भी query हो please let me know in the comment section. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe.